नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा रिवर। जी हाँ, उसका ओरिजिनेशन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से है। मैं ऐसी पावन धरा से बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी ईएसई की जो है सीरीज़ कंटिन्यू चल रही थी मेंस की, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए आइए देखते हैं। ये सेशन है हमारा 14 आईएएस मेंस। यह क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ ऑयल, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 0.9 इन द पाइपलाइन एज शोन, फिगर दिया हुआ है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रीडिंग एच शोन बाय द डिफरेंशियल मैनोमीटर fitted to the pipeline which is filled विद द मर्करी ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये आपको जो है फिगर अटैचमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे एच हाइट है, ये आपको कन्वर्जेंट सेक्शन का 0.2 मीटर डायमीटर दिया हुआ है। 0.5 मीटर डायमीटर आपको जो है डाइवर्जेंट जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसका। P1 प्रेशर दिया हुआ है 2 बार, P2 प्रेशर दिया हुआ है 0.8 बार, हाइट दिया हुआ है 0.2 मीटर। सो आपको देखना है। और ये जो आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो भरा हुआ है कौन सा, एच जी, जो हम अमूमन लेते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एच जी भरा हुआ है। ऑलराइट, देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके पास दो पॉइंट्स हैं, तो आप जो है अप्लाई क्या करते हो माय डियर साथियों जी, बर्नौली। बर्नौली, बी क्यू का मतलब होता है बर्नौली। बर्नौलीज इक्वेशन जो है हम अप्लाई करते हैं। राइट, तो दो पॉइंट्स के बीच में क्या हो जाएगा साथियों, पी वन बाई रू जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू बाई रू जी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू प्लस हेड लॉस। apart from that, then the continuity equation followed by a1 v1 is equal to a2 v2। अगर हम जो है कोई भी हेड लॉस नहीं ले रहे हैं तब उस केस में नेग्लेक्टिंग द आपके लॉसेस, लॉसेस कोई भी लॉस नहीं है ऑन दैट नोट। तो कंटिन्यूटी फॉलो अप करेगी, पाइप के बीच में कहीं भी स्टोर नहीं हो रहा है वाटर। तो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, जहाँ से हम वी टू कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई विद द 0.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द 4 इंटू वी वन डिवीजन ओवर दी 4 इंटू पाई इंटू 0.2 स्क्वायर। तो हमारी V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर साथियों, 6.25 टाइम्स V1। अब इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट ऑन कर देंगे। तो इक्वेशन क्या है, P1 बाई रो जी मतलब कि 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5, स्टार्टिंग प्रेशर 2 बार, बार मतलब 10 रेज टू पावर 5, रो जी 9810 अमूमन होता है जब वाटर का केस होता है, बट यहाँ जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन है। तो हियर 9.81 इंटू 10 क्यूब इंटू 0.8 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस Z1 is equal to 0, which is the reference point for beginning of the calculation. Now, apart from that, we have the P2 value over here 0.8 into 10 raised to power 5 upon 9.81 multiply with the 10 cube into 0.8 प्लस V2 पूरा जो है टर्म जो है V1 के टर्म में लेके आते हैं, तो 6.25 V1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 9.81 एंड हाइट कितनी है, हाइट आपकी हो जाएगी यहाँ पे 2। So after getting the value, we have to got the value over the Q as well as the V1। V1 कैलकुलेट हो जाएगा, एल से निकाल के रखिएगा 2.62 मीटर पर सेकेंड एंड द Q इज इक्वल टू A1 V1 पाई बाय 4.2
5 का स्क्वायर इंटू V1। देन आफ्टर दैट कैलकुलेशन 0.514 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यही डिस्चार्ज को हेड के लिए जो है कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूली Q इज इक्वल टू E2 अपॉन 1 माइनस E2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर की पावर 0.5 और स्क्वायर रूट इंटू 2TH मैनोमेट्रिक फ्लूइड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड माइनस 1 रेज टू पावर ऑफ 0.5 और square root. Now moving ahead, put these values over here. 0.514, 0.031 upon 1 minus 0.031 over the 0.196 square raised to power 0.5 into 2 into 9.81 multiply with the h 13.6 upon 0.8 minus 1 whole raised to power 0.5. After the calculation, take the calculation and you get the value of the h height. एक छोटा सा करेक्शन है डियर साथियों, आप लोग जो है यहाँ पे हाइट की वैल्यू जो है 0.2 की जगह 2 मीटर कर लेंगे। फाइनली हमारी एच का कंडीशन क्या आ जाएगा, एच कैलकुलेट करने के बाद साथियों 0.854 मीटर। दैट्स योर फाइनल आंसर। मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बोल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द फ्लो रेट Q for flow of water in flow of water in pipe of inside diameter, pipe of inside diameter D of 100 mm
using a venturimeter. Venturimeter with a machined convergent section. The throat diameter d, the throat diameter d of venturimeter of venturimeter is 60 mm. The venturimeter is in pipe section having on inclination theta of 45 degree as shown in figure from 1 to 2 in the net. In the net is 120 mm, 120 mm, and the value of h and the value of h for manometer is for manometer each 140 mm. Take density is equal to 999 kilogram per meter cube. Viscosity mu is equal to 1.12 into 10 raised to power of minus 3 CD venturi is equal to 0.995. ओके, चलिए इसे सॉल्व इट डाउन करने की कोशिश करते हैं हम लोग बड़े इजी वे में. कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जो है ओके.
Okay. Number 1 section. Number 2 section. Starting at the end, P as in diameter. ये एक पर्टिकुलर एंगल में है थीटा। इस सेक्शन का डायमीटर जो है स्मॉल डी है। Height is to be del. Small l and h. Heights are to be there. The manometric fluid is to be taken as mercury. Okay, dimensioning is to be done. Now apply the equations over here. What equations? Now manometric delta is equal to 0.12 times of cosine of 45 degree. So the delta is equal to 0.12 upon square root of 2. Now the manometric equation between the 2 points, so P1 plus density into gravity, so water का डेल्टा into L plus H, ये टोटल हाइट हुई, विच इज प्रेशर कॉलम्स लिख रहे हैं ना, P2 plus rho g of water into height length into height to mercury. So here after this we have get the value P1 minus P2 is equal to H times of rho g of H minus rho g of water gamma times minus water into gravity. After this we have the solid equation P1 minus P2 is equal to 0.14 into
13.6 minus 1, 999 into 9.81, okay, into height inclined 1, 0.12 upon square root of 2. Now the value of P1 minus P2 is to be calculated over here. You have to calculate, solve it down. 16456 Pascal. Now we have the formula for this Q actual one, which is CD coefficient of discharge into A2 into 2 divided by 1 minus A2 upon A1 square whole raised to power zero point 0.5 into P1 minus P2 upon rho plus d times of Z1 minus Z2. Now after that Q actual upon A2 is equal to times of CD of Venturi divided by square root over 1 minus A2 upon A1 square into the remaining one P1 minus P2 divided by rho plus G Z1 minus Z. Now P2 actual is equal to 6.27 meter per second. Now from continuity, क्या होता है A1 V1 is equal to A2 P2. So the V1 is equal to A2 by A1 into P2. So put the value V1 actual 2.26 meter per second. After that we have to calculate the flow rate, which is what? A2 times P2 actual. So get the value over here 0.1773 meter cube per second. That is the final answer. Easy easy. चलिए ठीक है, आपका सेशन इतना ही रखते हैं साथियों। आप लोग एक काम करना है, क्या पीएम क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना। थैंक यू गाइस। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति की शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।